ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री मामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री वेदव्यास महर्षये नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री श्रुतिमात्रे नमः। ओम श्री अध्यात्म रामाय नमः। शास्त्राय नमः। समस्त देवताभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो नमः। श्री आदिपराशक्तिमात्रे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। Straight away the chanting of Ahalya Krutha Sri Rama Stuti in continuation from where we stopped yesterday. The discussion. ओम अथ श्री ब्रह्मांड पुराण अंतर्गत श्रीमद् अध्यात्म रामायण अंतर्गत बालकांडांतर्गत पंचम सर्गांतर्गत अहल्याकृत श्री रामचंद्र परब्रह्म परमात्मनः स्तुतिः। ओम अहल्योवाच अहो कृतार्थस्मि जगन्निवासते पादाब्ज संलग्न रजः कणानहम् स्पृशामि यत्पद्मजशङ्करादिभिः विमृग्यते रन्धितमानसैः सदा। अहो विचित्रं तव रामचेष्टितं मनुष्यभावेन विमोहितं जगतो चलस्य जस्रं शरणादिवर्जितः सम्पूर्ण आनन्दमयोऽतिमायिकः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्र भागीरथी भव विरिञ्चि मुखान् पुनाति साक्षात् स एव मम दृक् विषयो यदास्ते किं वर्ण्यते मम पुराकृतभागधेयं मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरिं रामाभिधेयं रमणीयदेहिनं धनुर्धरं पद्मविशाललोचनं भजामि नित्यं न परान् भजिष्ये यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिर्विमृग्यं यन्नाभिपङ्कजभवः कमलासनश्च यन्नामसाररसिको भगवान् पुरारिः तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि। यस्यावतारचरितानि विरिञ्चि लोके गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजाद्याः आनन्दजाश्रुपरिषिक्तकुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये। सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराणः एकः स्वयं ज्योतिरनन्त आद्यः मायातनुं लोकविमोहनीयां धत्ते परानुग्रह एष रामः। अयं हि विश्वोद्भवसंयमानाम् एकः स्वमायागुणबिम्बितो यः विरिञ्चि विष्णुईश्वरनामभेदान् धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा। नमोऽस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपङ्कजं श्रियाद्धृतं वक्षसि लालितं प्रियात् आक्रान्तमेकेन जगत्त्रयं पुरा ध्येयं मुनीन्द्रैरभिमानवर्जितैः। जगताम् आदिभूतस्त्वं जगत्त्वं जगदाश्रयः सर्वभूतेष्वसंयुक्तः एको भाति भवान् परः। ओङ्कारवाच्यस्त्वं राम वाचाम् अविषयः पुमान् वाच्यवाचकभेदेन भवान् एव जगन्मयः कार्यकारणकर्तृत्व फलसाधनभेदतः एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया त्वन्माया मोहितधियः त्वां न जानन्ति तत्त्वतः मानुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम् आकाशवत्त्वं सर्वत्र बहिरन्तर्गतो अमलः असङ्गो हि अचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत् अव्ययः
योषिन्मूढाहमज्ञाते तत्त्वं जाने कथं विभो तस्मात् ते शतशो राम नमस्कुर्याम्यनन्यधीः देवमे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते स्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते भवभयहरमेकं भानुकोटिप्रकाशं करधृतशरचापं कालमेघावभासं कनकरुचिरवस्त्रं रत्नवत् कुण्डलाढ्यं कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षात् राघवं पुरतः स्थितं परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाताय यौपतिम् अहल्यायाः कृतं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिसंयुतः स मुच्यते अखिलैः पापैः परं ब्रह्माधिगच्छति पुत्राद्यर्थे पठेत् भक्त्या रामं हृदि निधाय च संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम् सर्वान् कामानवाप्नोति रामचन्द्रप्रसादतः ब्रह्मज्ञो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि वा मातृभ्रातृविहींसकोऽपि सततं भोगैकबद्धातुरः नित्यं स्तोत्रमिदं जपन् रघुपतिं भक्त्या हृदि स्थं स्मरन् ध्यायन् मुक्तिमुपैति किं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः इति श्रीमदध्यात्मरामायण अंतर्गत उमामहेश्वर संवादे बालकांडे अहल्याकृत श्रीरामचंद्रस्तुतिर्नाम पंचमः सर्गः। ओम तत्सत् सर्वं श्रीरामचंद्र परब्रह्म शरणारविन्दार्पणमस्तु। ओम समस्त देवताभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। Saluting every one of them. Sitarama, Uma Maheshwara, Vyasa, Shruti Mata and Parabrahma. What in very short, precise form we have to understand from the Ahalya's life is, for some mistake she got curse. During the curse time, long period of thousands of years, she deeply, intensely purified herself through tapasya, contemplated on the Lord. That purified antakarana and used that antakarana of the contemplation made the Lord appear and give her the final finishing touches. The moment she was touched, she from the stony life of ignorance is awakened to life of wisdom. And what wisdom she got is the entire stuti. All this stuti of Ahalya doing for Rama, describing him as Parabrahma, Ishvara and all, are the experiences about Paramatma by Ahalya when she was awakened by the touch of the Lord, before which she did for such a long period of tapasya, like a stone seated one place, not moving anywhere. And that stony life she got because of some curse. Curse is because she did mistake. So we all have done mistake, therefore we have curse to do. We invoke the curse to become human. Being human being like Ahalya, without moving from our inner position of that I am a seeker of the truth. Like Ahalya,
Continuously, when we do the tapasya of antakarana shuddhi, through doing everything as karma yoga, bhakti yoga, ashtanga yoga, and then with the shastra jnanam, when you do contemplation, the Lord will appear, he will give a touch. The moment a touch happens, the awakening happens. That I am no more Jiva, Aham Brahmas. From that Anubhuti, then the words come out about the reality. The reality is transcendentally Supreme Brahma. He alone with his Maya Shakti is Ishvara. As a Ishvara, he only through Trigunasa Maya become Brahma Vishnu Ishvara. And as a Vishnu himself in various periods of time at the various places to help or bless the Jivas and to protect the Dharma, he takes variety of avatars. Each avatar is beautiful, each avatar is unique. In that there is no doubt. Avatara Rama, no doubt. Vishnu Rupi Rama, no doubt. Then Narayana Rupi Vishnu Paramatma, no doubt. Parabrahma, no doubt. Everyone's position is very clear. And who are you? From the Parabrahma, one with him. From the Narayana, the Bhakta, him. From the Ishvara Rupa, we have to surrender to him and do what he says. As an Avatara Rupa, pray to him to protect us from our own problems or mistakes. In this way, we can relate with Paramatma at different levels. And all are right. And in them, when comparison comes, ultimate is Nirguna Parabrahma. Oh, hona hi chahiye. Further, the Shruti is the Pramana, Yukti is the Pramana, Anubhuti is Pramana. Is it not? The mud is there in the form of pots. But with little common sense, we know the mudness of the pot is the absolute reality, primordial reality. Because the mud has no form and shape, then only the mud can be given the form and shape. Therefore, formless, nameless, shapeless, mud alone absolute reality. For the formful, shapeful, nameful, variety of the creation of the pots, etc. In the same way, for the entire creation, in which the creator is there, the created is there, the creation is there, in the created, the variety are there. For all of them, primordially, the Parabrahma alone has to be the beginning and substratum. These are all logical thinkings. Clear? Now, if we actually have seen the meaning of all the shloka, in the light of what is shared now, that you and I, every one of us are Ahalya, doing something wrong. Because otherwise we got cursed to be a human in the Deha, Jiva. Jiva Bhava, Deha Tadatmya, Manushya Rupa. But at the same time, like though she is cast a stone outside, but inside she was given freedom to do the Upasana, Dhyana of the Lord. In fact, it's an advantage. As a stone, you can't move. That can't move itself is a blessing that one place she is staying and doing contemplation. Like as a corona, we could not move, but that itself was blessing that we could do thousands of classes. And she did it. And what she did, how she did, all that is resulted in arrival of Rama, touching by Rama, awakening to the Rama Anubhuti. And she did Stuti. After that, she in the realized state, she went to Pati's Loka to continue as long as Upadhi is there to do. After knowing the self, any Upadhi mein, any roop mein gyakt ho na, that's not a problem. That's all unreal illusion, Just now we saw in Bhagavatam, the latest and last sloka, Yadisma Pashet Asadindriyartham Nananumamenena Ananyadhihi. So, all this, he will not take it as Satyam. Manyate. Satyam na manyate. Na vastamiti manyate. In the same way. That is post-realization. Our job is, let's realize first the self. बाद में जो होगा देखा जाएगा. Yeah. Now, if you see that one, ki randhitamanai sai aho krutarthasmi jaganimasa padabja. So, I am krutartha because your dust of your feet touched me. It is enough for our mukti. But for getting the dust of the feet of God, we have to do so much of tapasya like Ahalya. That much time is required. Is it not? Now, second one, so many things can be explained. I will not go into all again. Then, भगवान के बारे में कहते हैं,
See, as a human being, you are doing a Vichitra Chesta. You are unmovable, yet like moving, appear like talking, etc. In this way, you are doing Vimohanam. Both. Rama is Parabrahma. Parabrahma only human being. And he is deluding us. Same Parabrahma is in the form of every human being. He is deluding us. He deluded us also by making us, taking ourselves as Manush. She realized that one. And who are you? Sampurnaha Anandamaya Atimayika. You are beyond the Maya. You are complete infinite, no finitude like of any Jiva. And you are not like Jiva becoming Dukhi in search of Sukha. You are Anandamaya. Then what did she say? Ki, your feet dust, touching that, the Ganga became so purified that the Brahma, Shiva, Ityadi get purified by taking in that Ganga the dip. Such feet of you, I am able to see. And that's why Pura Kruta Bhagadeyam. That what is the reason? Pura Kruta Bhagadeyam. Now do you see what is said here? What is said in Bhagavata 3 days back? 2 days back. What was said? Ki if at all we become kuyogi and before realizing self we die, what will continue next life? Wherever is stopped sadhana, vahinse. Again. Every life that way. That till this life's realization, whatever I have done in earlier lives, sequentially, that alone helped me. That she says, Ki pura akruta bhagadheyam. So, in the final Janma, we get Atmanubhava Moksha. Before that, in every of the Janma, consciously we have to do sadhana. And next Janma, whether I do consciously sadhana or not, depends on this Janma. In this Janma, if you have studied Shastra and become convinced that my nature is self, I have to realize why this is sadhana, and I start doing that. But the lifespan is small as a human, and the sadhana to be done is a lot. Therefore, in between, I have to leave the body. But in the next life, by the God's grace, I will continue. There also, again, I will go to some masterly Upanishads and get convinced and little more sadhana of Anvaya or Vetreka I do. To that extent, the Adhyatma goes away, nearing to the self happens. But before again, Pakwa, Yogatva, Suyogatva only, as a Kuyogi we may die. Again we are born. So she says, this is what Pura Kruta Bhagadeyam Kim Varnate Mama. Here the Pura Kruta of her is what? Both. After being cursed till this moment. For this moment, if every past moment is Pura Kruta only. Not only this, before being cursed also, when she served Gautama Rishi. That's the Pura Kruta Bhagadeya. And in fact, that curse of Agastya to her, it's only, Gautama, only has become blessing to her. He not only made her to stay a stone, but he gave her the memory. He go on doing Upasana of Rama, he will come, of Bhagavan, he will come as Avatar Rama after 1,000 of years, I don't know. She knows two things. Rama has to come and bless me, for that I have to do the sadhana. She is forgotten the time and everything. She went on doing. That is the lakshana of a committed sadhana. He is not aware of time or place or anything, and nor about any happenings out of prarabdha. His full focus is on what to do to reach what he has to reach. We have to reach Bhagavan's Kripa. Bhagavan's Kripa should bless us to get us enlightenment. For that, this is a sadhana. We focus on it. अभी जन्म लिया मनुष्य में किधर हो क्या फर्क पड़ता इसलिए we can see in this only toward the end Ahalya teaches us, oh Lord, in whichever the yoni you put me, please see that I don't forget you. Same you and I have to pray. That's what we did in the introduction of Bhagavad class today. First thing we said was such a beautiful Adhyatmic sadhana is there. Without doing that, we are only like Pashu. Second thing we said, that we are born in Hinduism, it is so glorious. So by saying this to what we have applied to the God is, if at all anagara janma, make me as a Hindu and make me as Sanatana Dharmi and Sadhak. Remind me of my sadhana. That much you do. Anyway, my sadhana will take me to the next stage. Even by your destiny of prarabdha, if I tend to forget, your krupa should get me back onto the track. So, till I reach you, let in every number of lives I may go through your prarabdha,
I must pursue the sadhana only. ऐसा दृढ़ संकल्प करना है. Like every day before sleep, next day I think, अच्छा कल 6 classes मुझे करना है. Because of that free strength and idea, next day those 6 classes never appear to be burden only. Otherwise, एक class करो ही थक जाते. Especially when there is no inspiration from any source. No help, nothing doing, all alone, struggling. Unless the strong thought is there, we can't be inspired to do all that. In the same way, in this life, while doing the sadhana, while going through the samsara, we should pray, let me not invoke new samsara for next life, let me not miss my sadhana. Right from beginning only, let me do sadhana in the next life. This is how when we go on strongly, telling to ourselves, preparing accordingly, putting application in front of the Lord through prayer. When we do, mind you, the next life is assured that we will be definitely the seekers only. All that is from her words of Purakruta Bhagadeyam. Then Bhagavan Rama Sundara Rupa, she says, I always meditate on. Then she said, Ki yat pada pankaja rajaha srutvir vimrugyam. Your charana raja, the Shastras are searching. Yan navi pankaja bhavaha kamalasanascha. Even Brahmadeva also is searching you. Yan namasara rasika Bhagavan Purarihi. Bhagavan Vishnu also is Rasika of that Lord's name, that is you, Rama. Tam Ramachandram, to that Rama, Anisha Mriti Bhavyami, always meditate in my heart. Then see that, Virinchi Loke, in the Brahma Loka, Yasya Avatara Charitani Gayanti. श्री रामचंद्र के अवतार चरित्रों के गान निरंतर होता है. कहा? ब्रह्मलोक में. Who do that? नारद मुखाः भव पद्मजाद्याः. Narad also sings, Shiva Bhagavan also sings, even Brahmadeva. All of them in Brahmaloka are doing the singing of the Ramacharitra only. And while doing so, how their face is Anandaja Ashru Parishakta, full of the joy coming from the eyes, joy tears of joy. So too, even Vagishwari. These are the 4 main speakers in Brahmaloka. Brahmadeva himself speaks. Then Brahma, Manasaputra, Narada speaks. Brahma, Bhurukutu se Ayava, Rudra speaks. Then that Brahmani called as Saraswati. ये चारों लोग, चारों एक ही चीज बोलते वहां at that Ramacharitra. And while doing so, there are so much of tears of joy. To that Rama, Sharanam Prapadye, I take refuge at his feet. How much informative and inspirational and empowering and useful are the meanings of these shlokas, you just see. Thank God at least now we started studying Shastra. Better late than ever. If you had started 30-40 years back, by now we would have mastered everything. But कोई गल नहीं, अब शुरू तो किया. मजा आ रहा है, थोड़ा समझ रहे हैं. शास्त्र को में मजा आ रहा है का अर्थ अंतःकरण शुद्ध हो गया, हो रहा है. अभी नहीं आ रहा है का अर्थ हुआ so many vasanas, desires of the world are there. That's why everybody cannot cherish Shastra. Everybody cannot understand the sublime. अब बैठने का ही होता है नहीं भाई, अब सुनो, दिमाग लगा के समझो, किससे होगा. आप मुझे कुछ लोग who are very sure that what I don't say, therefore you come. You are genius. Wonderful. I love you all. Then next one, Soyam Paratma Purusha Purana. I'm just summarizing which we have detailedly seen in last 2 days. That you are the Paratma. And you are Purusha. And you are Purana. Purana is before time. Purusha is all permeating. Purushayanat. Paratma is the supreme self of everything. Supreme self of everything, therefore permeating everything, therefore first before everything. Soyam Paratma, supreme self, Purushaha, all pervading, Puranaha, much before anything created. First he was there. From him only everything came. Then such you are Ekaha. Now these are all the Paramatma's Lakshanas. Holding on to this
We meditate, we reach to the Paramatma in Anubhava. Every word is useful for contemplation, like Ekaha is a word of contemplation. Try to reach that Eka by transcending all Aneka. That is what Drukdrushya Viveka in Telugu is. Aneka are the Rupas, Eka is the I. Aneka are the Indriyas, Eka is Mana, Aneka are the Vrittis, Eka is Chaitanya. And Chaitanya are not Aneka. That is me. Rupam Drishyam Lochanam Drukta, Drishyam Drukta Manasam, Drushyadevtya Sakshi Drugana Drishyate, then Nila Pita Stula Sukshma Hrasva Dirvayadi Vedataha Nana Vidani Rupani. But Lochanam Pashyat Ekada. So to eyes, Andya Mandya Patuteshu, Netra Dharmeshu Chaikada, Sankalivet Manasrota Twagado Inojadaminam, then Kama Sankalpa Sandeho Shraddha Shraddhe Dhruti Tare, there are all the variety of thoughts in the mind. Consciousness illuminating all thoughts is what? Taking that help of, see, to explain the meditation on this word Eka, the great Acharya like Shankara come and help us through those prakaranas. How to meditate on one? Seen are many, seer is one. So the drishyas are aneka, drashta is eka. That drashta is final eka, drashta is sakshi. That sakshi is chaitanyam. The chaitanyam is me. Every word here is that. Like Paratma, which is the supreme self. Everything appears to be in the self, but it is an effect. It has a cause which is itself, without which it is not. In this way, the effect is the cause is the self on from which the effect comes. Trace back to the cause. The causeless cause of all is called as Atma. In the same way, Purushaha, who is the one who is all permeating, this you understand through the Anvaya Paddhati. Puranaha, who is there, who is illuminating even the concept of time, which again is divided into three: past, present, future. Think about him, that is contemplation. So to Swayam Jyotihi, what is that which is not requiring the light Jyoti of any of the things? What is that? Mahati Jyoti, the Mehta Jyoti, highest Jyoti, which doesn't need other illumination. Swayam Jyoti. Ekaha Swayam Jyotihi, then Anantaha. There is no anta to this because of any reason. Therefore, Adhyaha. Adhyam is Karana for everything. Then, Maya Tanum Loka Vimohaniyam Datte. To do the Vimohanam of the Loka, he takes the Maya Tanu. No, he did not come to do the Vimohanam of the Loka. But he took that body and came to do his work of Dharma Sthapana. But we, while seeing him doing that, with our own ignorance, imagination, we take him also as human being. That is our mistake. But why he has taken that human form and even seen all by all of us as human, and we were dealing with him only as human, इतना बर्दाश्त करते हुए भी उन्होंने मनुष्य अवतार क्यों लिया? इतना बेइज्जती पाते हुए भी, because paranugraha. It is only to do the anugraha of we all the jivas. Eshaha Ramaha. That is the sweetness of Rama. Like Krishna avatar. Right from childhood, everybody dominated him. He went on taking all that smilingly, without any regrets outside. Why? Because he was loving the jivas, he came to serve them, bless them, protect them. Otherwise, he being the Paramatma, everywhere when he was insulted, he should have reacted. All that his anger reaction, when he was not taken as Bhagavan, but taken as human and as mistreated by everyone, he shows that anger in Bhagavad Gita. In the 9th chapter, he becomes angry. Avajananti mam moodhaha manushim tanuvashritam. मूढ़ लोग मेरा अवज्ञा करते हैं, मेरे को मनुष्य मानकर. परम भाव मजानंतः. They don't know my supreme Brahma, Bhuta Maheshwaram.
I'm the supreme being for everything. Not knowing like that, they take me as Manushya and then they are insulting me so much. Nalayak log, gade log. That one scolding it as, in childhood he was told as thief. In the fourth chapter, uska wo badla lete, in third chapter. He says, those people, what Bhagavan gave, using it for the Yajna Bhavana and getting the result, and if he doesn't share with others and he enjoys for himself, वो गधे को चोर बोलना है. तुम लोग मुझे चोर कहते हो. यो भुंक्ते स्तेन एव सा. इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सा. दूसरों के शेर को भी खुद खाने वाले को चोर कहने वाले. मैं खुद ही वो मटका फोड़कर, वो तो मेरा हो गया, मुझे खाना चाहिए था, मैं तो सबको बांटता था. यू कॉल मी एज चोर. नालायक लोग. ही स्कोल्ड्स देयर दीज टू थिंग्स. मेरी अवज्ञा होती है, टेकिंग मी एज ह्यूमन बीइंग, एंड मी आई एम कॉल्ड एज चोर. इन फैक्ट दिस फेलो इज चोर, ही सेज. Whoever are selfish, they are chor. That is the avagnya done to him, but he came for a purpose of blessing, therefore he never minded. See, Nanda Yashoda, बेटी की तरह कितने बार धमकियां दिए होंगे. वो एडिट किया व्यास जी ने. प्यार की बातें लिखे. How many गोपिकास have complained against him. हम भी उसको मीठा मीठा बना दिए, पर कितने बार दुखी किए होंगे. Thereafter you see, बलरामा बड़े भाई की तरह हमेशा domination only. Everywhere he went, the Patni is troubled. Arjuna also himself said, Yachavahasaartamasatkrutossi viharasayasana bhojaneshu ekothvapyachutat kshamaksham tat samastam tat kshamayatva mahapravayam. How many times, not knowing your greatness, I made a mazak of you. When we were alone, when we were public, when we were talking, walking, eating, sitting together. Oh, Kshamasva, I don't know you. Now I know Pitasya lokasya charatarasya tamasya pujyasya gururgaryan natvat samastya vyadikah putonya lokatre apya pratima prabhava tasmat pranamya pranidayakayam prasadetva vamishametyam piteva putrasya sakheva sakyo priya priyaya arhasi devasodhum. They are all very powerful slokas. So we do the avagnya of gurus, of Paramatma, of even the avatara. And that we do out of our murkhata. अब मूर्ख बंदे को क्या करना चाहिए? छोड़ दो, बेवकूफ है. Wise person doesn't do mistakes, so he need not punish. बेवकूफ तो he does only mistake. That's the proof that he is बेवकूफ. What to do? भगवान तमाशा देखते. We have to shift our identity from मूर्खता बेवकूफ to a wise person. What is wisdom? Never do avagnya of avatara and guru as shastra. And what is not doing avagnya? Take them as Paramatma only, arriving in that form, only to bless us, to take us to Paramatma. Then make use of their presence and guidance, reach out. है कि नहीं? आपने मुझे कुछ दिया, मैं नहीं लूं, वो भी अवज्ञा हो गया. लेकर उधर रख दिया, वो भी अवज्ञा हो गया. और किसी को दे दिया, अवज्ञा हो गया. फेंक भी दिया, वो भी अवज्ञा हो गया. Only when I make right use of it, that is called as respecting you. So Paramatma is coming in the form of Avatara, Guru and Shastra. So we have to make use of it for your own evolution. Then you are not doing avagnya. Avagnya means insulting, humiliated, avaman karna. That's where. So here also, people are in their own delusion, don't understand you. You came to serve them or to protect them. They take you as human being. And they did avagnya. That's what she says. And why did you do that? Paranugraha esharatma is your supreme anugraha. हो गया? Then ayam hi vishwa udbhava samyamanam. For this entire worlds of Srishti Laya, you are the ekaha samaya guna bimbitaha yaha virinchi Vishnu Ishwanam Vedan Natte. This is what. You are Bimba, Parabrahma Tattva. You only through your own Maya Shakti and its three gunas. You are a Pratibimbita. As Brahma to create, Vishnu to maintain, Shiva to dissolve. So Brahma, Vishnu, Maheshwara Rupas are the Pratibimba of the Bimba Rupa Parabrahma. That is you.
In the Pratibimba kahan hota hai? Madhyam mein. Madhyam is called the three gunas of Maya. And whose Maya is that? Again of Paramatma. And what is Maya? Which is not there in Paramatma, and which is the cause of the entire creation when you see it. It's a peculiar power it is. Vichitra hota hai Maya. Like every power is Maya, like Agni ka burning power. You can see the Agni, it is in red color. You can see the boil happening in the hand. When the hand is exposed to the Agni or something hot happens. Now, how did the Agni burn the hand and create a boil? By its power of burning. Is it not? Now show the power. Can you see the power? You can't, but you can see the effect of the power. Is it not? Boil shows you the effect of the power of the Agni saying there. You can see Agni, you can see the effect of the Agni's power, but not the power. You can see Paramatma. You can see the effect of the power of Paramatma in the form of Rupanamaatmaka Jagat. You can never understand Maya. That's why it's called Maya, Yama, Samaya. That which is not in reality is Maya. Yet it shows its effects. That's Maya. Accepting it like that alone is solution for it. Then the second solution is know the Paramatma Maya, Maya Krutha Jagat Gal. So in this way, Ekaha sa Maya Gudabimbitaha Virinchi Vishnu Ishvara Nama Vedan Datte. And how do you do that? Swatantraha. Like you and I also work according to gunas. But you are not swatantra with gunas. We are paratantra. जब नींद आती है, you can't get up and do your meditation. सोना ही पड़ेगा. And जिस दिन नींद आती नहीं, कितना भी sleeping tablets ले लो, you won't sleep. Is it not? How many times it happened to us? How much we try to sleep in the class, नींद आता ही नहीं. है कि नहीं? And how much you try to wake up in front of movie, and you feel sleepy because that is to put you to sleep and this is to awaken you. साहब जी, अब अपने लिए एग्जाम्पल बोल रहे हो, खुश हो जाओ, हमको बताए क्या हो रहा है. Is it not? He is Swatantra. We are not Swatantra. We are not one with Chaitanya Tattva. Therefore, the gunas dominate us. Through the guna, through the jnana, sattva guna, you want to know something. Through rajoguna, you want to do and get something. Through tamaguna, you want to indulge. When these three are there, you are slave. Like to anybody, when you expect from them through attachment, you become slave to them. It can be parents, wife, husband, children. And there are millions of people. You are not slave to them. Why? Because you don't want anything from them. With regard to all others, you are Swatantra. But the people around us, we are Paratantra because we depend on them, because we want something from them. And those people, you reject anything from them, and you are Paratantra. Like you want knowledge from the Shastra, therefore you are Paratantra here. Nahi chahte ho, like many wise people, go to hell, the Swami and his classes, they are Swatantra. You are Paratantra, Vichare. You want to have Jnanam and all. This is the meaning there. Datte Swatantra. And then Paripurnaha. There is no Apurnata in Paramatma. He is complete, he is infinite. And that Paripurnata is only of the Atma. You are the self, you are the Paripurna self, you are Swatantra. You only take Brahma Vishnu Maheshwarupa, which is your Pratibimba in these three gunas of your own Maya Shakti. And with that, you do the Vishwa Udbhava Sthiti Samyama. Such you, my salutation. Namostu te Rama, tava angri pankajam. Hey Rama, te tava angri pankajam namaha. To you I my salute, and your feet are Shriyadhrutam Vakshasi Lalitam Priyat. Shri is Lakshmi, Lakshmi Shakti. Shakti takes your feet to the heart and does Upasana. Means Shakti knows she cannot work without the Shaktiman. Then you, with this one feet, covered all the three worlds in your Vamana and then all the Rishi Muni have, by your grace only, realized the self. Your grace came to them because they, in their meditation, have meditated on your feet. Oh, Dhyayam Munindraihi.
And what is the highest thing required for doing meditation on the feet of the Lord? Abhimana varjitai. Yeah? Those who have given up, aham mama abhimana, they only on the feet of in the seat of meditation in the heart can do meditation on the feet of God. When Bhagavad Charana pe dhyan lag gayo, है ना, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की, चरणन की हरि चरणन की, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, फिकर नहीं मोहे तरणन की, मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की हरि चरणन की. Guru Charana mein, Hari Charana mein. How many beautiful bhajans are there? Lagan lag gayo, then it is His grace just opens the lock of wisdom. You just see the self. So मुनि इंद्र लोग बिना अभिमान का हृदय में आप ही के हृदय में चरण कर ध्यान करके अपने हृदय में आप ही का चरण का ध्यान करके they reach. So there are two things. First, they gave up abhimana of ahanta mamata through their munitva of contemplation or inquiry. That unless Bhagavan's grace comes, we can't know the self. Unless the self is known, we can't be liberated. And the grace cannot come unless we meditate on Him, His feet in our heart. And that we can never do without avoiding all the other dissimilar thoughts. And every thought on the seat of meditation coming and disturbing me because of ahanta and mamata. Okay? समझ में आ गई की बात? Whatever towards either your own dehinde manabuddhi or the things and beings around, we have mama, hum, that only comes to your memory and disturbs you. So they gave up ahamta mamata means what? They gave up identity with every upadhi and deha. Thus, the mind has become quieted and still. In that, they did meditation on the charana of Paramatma. That's it. वो ऑटोमेटिक हो जाती है. जब स्विच डाल दो तो बिजली आती है. दैट्स हाउ द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हैव फिक्स्ड द वायर थ्रू द वॉल. You may never see the wire in the wall, but throughout life you use the switch to get the light. In the same way, the meditation at the feet of the Lord in your heart has its own connection of invoking God's grace to reveal the self to us. You may or may not see it. You need not see it. You do what? Switch डालो, आ रहा है बिजली, टेंशन क्यों? हर एक चीज थोड़ी जानी है वायर कौन सी कंपनी के, इसके अंदर कॉपर का क्वांटिटी कितना है, कितना थिक और थिन वायर है ये. You can know, but that did not add to your operation of the electricity by switching on or off. That's the job of electricians, the rishis. They discovered and gave. You use it and realize. So Muni is he who through manana knows that only in Atmanubhava, Brahmanubhava, Bhagavanubhava, Mukti, and that will not come without His grace. His grace will not come without I meditate on His feet. I will be able to meditate on His feet only when the thought disturbances go away, even the worldly attachment go away. That will happen only when I give up Abhimana. So right from beginning, whatever he has done, he is called Muni. He is done as a Mananam and removed all the obstacles, added what's required. And when he meditated on the feet of the Lord in the heart, Bhagavan came. भगवान केम इन प्रत्यक्ष रूप में आकर शब्द भी कह सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, ऊपर से अपने करुणा किरण अनुग्रह किरण भेज सकते हैं. वॉट एवर हिज चॉइस ही डज इट बाय दिस मेडिटेटिंग योगी का वो है आखिरी वाला कर्टेन जो है रेज हो जाता है. द फाइनल कर्टेन इज रिमूव्ड. ही इज प्रत्यक्ष विद द अनुभूति ऑफ हिज ओन सेल्फ व्हिच इज एवरीवेयर देयर, व्हिच इज कॉल्ड एज आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, whatever names you give. So in this way, Namostu te Rama tavangri pankajam Shriyadhrutam vakshasi lalitam priyat akrantam ekena jagatrayam pura dhyayam munindraihi abhimana varjitahi. So from today, we will meditate on the feet of the Lord और जगन माता. ये तो राम जी का कथा है, रामचरण को हृदय में चरण धरो. गुरु के चरण धरो, प्रभु का नाम भरो, प्रभु का नाम भरो, सद्गुरु के चरण धरो, गुरु के चरण धरो, प्रभु का नाम भरो. देखो
प्रभु के नाम से हृदय को भरो, गुरु के चरण को दर धरो, वो सब कुछ हो जाएगा। Yesterday, day before, almost every day this topic is coming. Sri Venkatesha Charanau Sharanam Prapadye, Sri Ramachandra Charanau Sharanam Prapadye, Sri Samba Sadashiva Charanau Sharanam Prapadye, Sri Mato Charanau Sharanam Prapadye, Sri Sadguru Charanau Sharanam Prapadye. After this, now we have seen all that I know, but I just felt like going in another angle to taste it, because like all other texts, once we finish, we never go back to it. जिस दिन पढ़ रहे हैं उसी दिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट टाइम देकर आनंद उसका ज्यादा लिया जाए, वही साधना भी बनेगा. That is also little additional justification done to the study. Justice done to the study. Is it not? अधूरा नहीं छोड़ा, जितना कैपेसिटी उतना यूज करके समझने का प्रयत्न किया. Even if every word is repeated, it is worthy. But new angles, little more subtlety, new tips for sadhana, भगवान गुरु is revealing to us through this. जब कहानी होती है तो उसको फिर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं. तत्व चिंतन करने के टाइम हमको थोड़ा ध्यान देना. एंड दिस इज अध्यात्म रामायणम. हो गया. Now these shlokas, we will take 1 or 2 days. We will see them. Sarvam Sri Ramarpanamastu. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasa Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti 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 Hari Om. Sri Gurubhyo Namaha. Sri Ramachandra Bhagavana Ki Jai. Sadguru Maharaj Ki Jai. Thank you, friends. Our stotrams today are first, every day what we do, then Vishnu Pratah, Ramasya Pratah Smarana. इतना काफी है आज. मंत्रार्थ पद स्तोत्रम, नारायण स्तोत्रम, tomorrow we will do. Then Krishnastakam, Achyutastakam, other day. Bhavani Ashtakam, Annapurna Stuti, Diva Vyapara Dakshivapana, other day. Surya Anjanaya, other day. Then Brahmanamavadi, then Ganga, पुष्कर, इससे हो गया. तो 10-12 दिन में ये मेरे पास जो बुक है इसके अंदर के पारायण हो जाएंगे. There's so many collections of stotras by so many publishers. My idea is what? Every day, along with Tattva Chintanam through Bhagavad Ramayanam, conclude the day with a devotional surrender to the Lord through the parayana of the stotras. More deeply, intensely, sincerely, committedly we do, we are tuning more to the Lord, and we are getting place in the awareness of Lord. When Bhagavan becomes aware of our presence, our upasana, then he gives more blessings to us, so that our manobuddhi are vikasita through bhakti and jnanam, leading to mukti. That's the idea. As we do every day. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantareye Amritakalashastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Bhagyavdi Chandrika Bhakta Chitta Keki Ghana Ghana Roga Bharata Dambholer Murtidara Kutharikaye Namo Namaha. Om Nasai Roga Hare Sopira Saptanirantara Tvira. Om Shri Hanumadviraya Namaha. Om Shri Hanumate 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 Namaha. Shiva Smaranam. Om Namah Shivaya. 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 Lakshmi Narasimha. Om Vajranakaya Vidmahe Tikshna Dhimahi Tanno Narasimha Prachodayat. Om Namo Bhagavate Shri Lakshmi Narasimhaya Prahladaya Chva. Om Vajranakaya Vidmahe
तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओं नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओं वज्रन्नखाय विद्महे तीक्ष्णदग्गष्ट्राय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्। ओं नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च। ओं परब्रह्म परमात्मनः श्रुतिमातुः समस्तदेवतानां गुरूणाम् अनुग्रहद्वारेण अस्मिन् क्षणे एव आत्मानुभवसिद्ध्यर्थं सनातनधर्मस्य वैदिकसंस्कृतेः विश्वव्याप्त्यर्थं श्री आद्यशङ्कराचार्य कृत विष्णोः प्रातस्मरणं श्रीरामस्य प्रातस्मरणस्य पारायणं तदनन्तरं श्रीललिता त्रिशति स्तोत्रपारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। श्रीमातुकृपाप्राप्त्यर्थम् आदौ श्रीविष्णोः प्रातस्मरणम् ओम अद श्री आद्यशङ्कराचार्य कृत श्रीविष्णोः प्रातः स्मरणम् ओम प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्यै नारायणं गरुडवाहनम् अब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रं प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायण प्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्भजामि भजताम् अभयं करं तं प्राक् सर्वजन्मकृतपाप भयापहत्यै यो ग्राहवक्त्रपतिताङ्घ्रिगजेन्द्रघोर शोक प्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः। इति श्री आद्यशङ्कर कृत विष्णोः प्रातः स्मरणं। सेम् वे ओमद श्री आद्यशङ्कराचार्य कृत श्रीरामस्य प्रातः स्मरणं। वी आर स्टडीइंग रामकथा। ॐ प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं मन्दस्मितं मधुरभाषविशालफालं कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम् प्रातर्भजामि रघुनाथ करारविन्दं रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्यः यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं सीताकर ग्रहणमङ्गलमापसद्यः प्रातर्नमामि रघुनाथ पदारविन्दं वज्राङ्कुशादि शुभरेखि सुखावहं मे योगीन्द्रमानसमधु व्रतसेव्यमानं शापावहं सपदि गौतमधर्मपत्न्याः प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथ नाम वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकाम प्रीत्या सहस्रहरिनाम समं जजाप प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ते नीलाम्बुजोत्फलसिते तररत्ननीलाम् आमुक्तमौक्तिकविशेष विभूषिताढ्यां ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुं यश्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि नित्यं प्रभातसमये पुरुषः प्रबुद्धः श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यः भूत्वा प्रयाति हरिलोकम् अनन्यलभ्यम्।
इति श्री आद्यशङ्करकृत श्रीरामस्य प्रातः स्मरणम्. See, Shapavaham Saupati Gautama Dharma Patnyaha. The one who removed the shap of the Gautama Patni Ahalya. We are studying the Ahalya Krita Stuti also. Clear? Now beautiful. We chant our Lalita Trishati. Okay. Om Namo Narayana. How big is it? How many shlokas do I have the energy? Om Namo Narayana Narayana Narayana. Vammo Vammo Vammo. अरे बाप रे खत्म ही नहीं होता. ओहो वड्डा है बहुत वड्डा करांगे. ओम अथ श्री ललिता मातो कृपया अस्मिन् क्षणे आत्मानुभव सिद्धि द्वारा मुक्ति प्राप्त्यर्थम सनातन धर्मस्य वैदिक संस्कृतेः विश्वव्याप्त्यर्थम शरन्नवरात्रि शुभ संदर्भे द्वितीय दिवसे श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र रत्नस्य पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे. Start. ओम अथ श्री ललिता त्रिशती स्तोत्र रत्नम् ओम सकुंकुम विलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकाम् समन्दहसिते क्षणाम् सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलाम् जपाकुसुमभासुराम् जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्. अगस्त्य उवाच हयग्रीवदया सिन्धो भगवन् भक्तवत्सल तत्तः श्रुतमशेषेण श्रोतव्यं यद्यदस्ति ततो रहस्यं नाम साहस्रम् अपि तत् संश्रुतं मया इतः परं च मे नास्ति श्रोतव्यमिति निश्चयः. तथापि मम चित्तस्य पर्याप्तिर्नैव जायते कार्त्सान्यर्थप्राप्य इत्येव शोचयिष्याम्यहं प्रभो. किमिदं कारणं ब्रूहि ज्ञातव्यां शोऽपि वा पुनः. अस्ति तेन्मम तं ब्रूहि ब्रूहीत्युक्त्वा प्रणम्य तं. सूत उवाच समाललम्बे तत्पाद युगणं कलशोद्भवः हयाननो भीतभीतः किमिदं तिति मुञ्चेदिदं चोक्त्वा चिन्ताक्रान्तो बभूवसः. चिरं विचार्य निश्चिन्वन् वक्तव्यं समयेत्यसौ तूष्णीं स्थितः स्मरन्नाज्ञां ललिताम्बा कृतां पुरा. तं प्रणम्यैव स मुनिः तत्पादावत्यजन् स्थितः. वर्षत्रयावधि तथा गुरुशिष्यौ तथा स्थितौ तच्छृण्वन्तश्च पश्यन्तः सर्वलोकाः सुविस्मिताः. तत्र श्रीललिता देवी कामेश्वर समन्विता प्रादुर्भूता रहसि एवं हयग्रीवमवोचत. श्रीदेव्युवाच अश्वाननावयोः प्रीतिः शास्त्रविश्वासिने त्वया राज्यं देयं शिरो देयं न देया षोडशाक्षरी. स्वमातृजारवद्गोप्या विद्वेषेत्यागमा जगुः ततोति गोपनीया मे सर्वपूर्तिकरी स्तुतिः. मया कामेश्वरेणापि कृत्वा सा गोपिता भृशं मदाज्ञया वचो देव्याः चक्रुर्नाम सहस्रकम्. आवाभ्यां कथितं मुख्यं सर्वपूर्तिकरं स्तवं सर्वक्रियाणां वैकल्या पूर्तिर्यज्जपतो भवेत्. सर्वपूर्तिकरं तस्मात् इदं नाम कृतं मया तद्ब्रूहि त्वम् अगस्त्याय पात्रभूतो न संशयः. पत्न्यस्य लोपामुद्राख्या मामुपास्तेति भक्तितः अयं च नितरां भक्तः तस्मात् अस्य वदस्व ततो. अमुञ्चमानस्त्वत्पादौ वर्षत्रयमसौ स्थितः. एतद् ज्ञातुमतो भक्त्या हि इदमेव निदर्शनम्. चित्तपर्याप्तिरेतस्य नान्यथा सम्भविष्यति. सर्वपूर्तिकरं तस्मात् अनुज्ञातो मया वद. सूत उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधावम्बा कामेश्वर समन्विता अथोत्थाप्य हयग्रीवः पाणिभ्यां कुम्भसम्भवं संस्थाप्य निकटे वाचम् उवाच वृषविस्मितः. हयग्रीव उवाच कृतार्थोऽसि 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 घटोद्भव. तत्समो ललिता भक्तः नास्ति नास्ति जगत्त्रये. येनागस्त्य स्वयं देवी तव वक्तव्यमन्वशास्.
अन्मशात् सच्चिष्येण त्वयाहं च दृष्टवानस्मि तां शिवां यतन्ते यद्दर्शनाय ब्रह्मविष्णीशपूर्वकाः अतः परं ते वक्ष्यामि सर्वपूर्तिकरं स्तवं यस्य स्मरणमात्रेण पर्याप्तिस्ते भवेत् हृदि रहस्य नाम साहस्रात् अतिगुह्यतमं मुने आवश्यकं ततो हि तत् ललितां समुपासताम तदहन्ते प्रवक्ष्यामि ललिताम्बानुशासनात् श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः कादिवर्णक्रमान्मुने पृथक् 20 नामानि कथितानि घटोद्भवा आहत्य नाम्नां त्रिशति सर्वसम्पूर्तिकारिणी रहस्यातिरहस्यैषा गोपनीया प्रयत्नतः तां शृणुष्व महाभाग सावधानेन चेतसा केवलं नाम बुद्धिस्ते न कार्या तेषु कुम्भजा मन्त्रात्मकत्वमेतेषां नाम्नां नामात्मतापि च तस्मादेकाग्रमनसा श्रोतव्यं भवता मुने सूत उवाच इत्युक्त्वा तु हयग्रीवः प्रोचे नाम शतत्रयम् ॐ अस्य श्रीललिता त्रिशती स्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता माहेश्वरी देवता ऐं बीजं सौः शक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऐं इत्यादि अङ्गन्यासकरन्यासाः कार्याः अथ ध्यानम् ॐ अतिमधुरचापहस्ताम् अपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणाम् अतिशयकरुणाम् अभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे हयग्रीव उवाच ॐ ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नि करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनकापाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीटिसौरभ्या कल्लोलितककुप्तटा कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा चैकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतत्तदित्यनिर्देश्या चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमा बोध्या च एकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता च एषणारहितादृता एलासुकन्दिचिकुरा च ऐनः कूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा च ऐकैश्वर्यप्रदायिनी एकातपत्रसाम्राज्य प्रदा चैकान्तपूजिता एधमानप्रभा चैजत् अनेजगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या च एकप्राभवशालिनी ईकाररूपिणी शित्री च ईप्सितार्थप्रदायिनी ईदृगित्यविर्देश्या च ईश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी च ईशत्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षित्रीक्षणसृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा ईडिताचेश्वरार्धाङ्ग शरीरेशादिदेवता ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ईश्वरोत्सङ्गनिलया च इतिबाधाविनाशिने ईहाविरहिता चेशशक्ति रीषत्स्मितानन ईहाविरहिता चेशशक्तिरीषत्स्मितानन लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता लाकिनी ललनारूपा लसद्दाणिमपाटल ललन्तिका लसत्वाला ललाटनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वल दिव्यांगी लक्ष्यकोट्यण्डनायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्धकामालता तनुः ललामराजदलिका लम्बमुक्ता लताञ्चिता लम्बोदर प्रसूर्लभ्या लज्जाढ्यालयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रीं पदप्रिया ह्रीङ्कारबीजा ह्रीङ्कारमन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षण ह्रीङ्कारजवसुप्रीता ह्रीं मतिः ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिधा ह्रीङ्कारवाच्या ह्रीङ्कारपूज्या ह्रीङ्कारपीठिका ह्रीङ्कारवेद्या ह्रीङ्कारचिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकाररूपा हलधृत्पूजिता हरिणेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रसेविता हयारूढा सेविताङ्ग्रिर्हयमेधसमर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानव हत्यादिपावशमनी हरिदश्वादिसेविता
हस्ति कुंभोत्तुंगकुचा हस्तिकृत्य प्रियांगना हरिद्रा कुंकुमादिग्धा हर्यश्वाद्यवरार्चिता हरिकेश सखी हादि विद्या हालामदालस सकार रूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमंगला सर्वकर्त्री सर्वदात्री सर्वहंत्री सनातने सर्वानवद्या सर्वांग सुंदरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वाभरणभूषिता ककारार्था कालहंत्री कामेशी कामितार्थदा कामसंजीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला करभोरुः कलानाथ मुखी कचचिताम्बुदा कटाक्षस्यन्ति करुणा कपाली प्राणनायिका कारुण्य विग्रहा कांता कांतिधूत च पावणिः कलालापा कंबुकंठी करनिर्जित पल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकोज्ज्वला हकारार्थांसगतिः हाटकाभरणोज्ज्वला हारहारिकुचा भोगहाकिनी हल्यवर्जिता हरित्पति समाराध्या हठात्कार हतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्दसंतमसापः हल्लीहालास्य संतुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी हानोपादान निर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी हा हा हु हु मुखस्तुत्या हानिवृद्धि विवर्जिता अय्यंगवीन हृदया हरिकोपारुणांशुका लकारार्था लता पूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी लास्य दर्शन संतुष्टा लाभालाभ विवर्जिता लंघ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिता लाक्षारस सवर्णाभा लक्ष्मणाग्रज पूजिता लभ्येतरा लब्धशक्ति सुलभालांगलायुधा लग्न चामर हस्त श्री शारदा परिवीजिता लज्जापद समाराध्या लंपटा लकुडेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्ध संपत् समुन्नतिः ह्रींकारिणी ह्रींकारादिर् ह्रीं मद्या ह्रीं शिखामणिः ह्रींकार कुंडाग्निशिखा ह्रींकार शशिचंद्रिका ह्रींकार भास्कर रुचिः ह्रींकारांबोध चंपला ह्रींकार कंदांकुरिता ह्रींकारैकपरायण ह्रींकार दीर्घिका हंसी ह्रींकारोद्यान केकिनी ह्रींकारारण्यहरिणी ह्रींकारावालवल्लरी ह्रींकार पंजरशुकी ह्रींकारांगणदीपिका ह्रींकार कंदरा सिंही ह्रींकारांबुजभृंगिका ह्रींकार सुमनोमाध्वी ह्रींकार तरुमंजरी सकाराख्या समरसा सकलोत्तम संस्तुता सर्ववेदांत तात्पर्य भूमि सदसदाश्रया सकला सच्चिदानंदा साध्वी सद्गतिदायिनी सनकादि मुनिध्येया सदाशिव कुटुंबिनी सकलाधिष्ठान रूपा सत्वरूपा समाकृतिः सर्वप्रपंच निर्मात्री समानाधिकवर्जिता सर्वोत्तुंगा संगहीना सद्गुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वर मनोहरा कामेश्वर प्राणनाडी कामेशोत्संगवासिनी कामेश्वरालिंगितांगी कामेश्वर सुखप्रदा कामेश्वर प्रणयिनी कामेश्वर विलासिनी कामेश्वर तपस्सिद्धिः कामेश्वर मनःप्रिया कामेश्वर प्राणनाथा कामेश्वर विमोहिनी कामेश्वर ब्रह्मविद्या कामेश्वर गृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वर महेश्वरी कामेश्वरी कामकोटि निलया कांक्षितार्थदा लकारिणी लब्धरूपा लब्धदीर् लब्धना वांछिता लब्ध पाप मनोदूरा लब्धाहंकार दुर्गमा लब्ध शक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्य समुन्नतिः लब्ध बुद्धिर्लब्ध लीला लब्ध यौवनशालिनी लब्धातिशय सर्वांग सौंदर्या लब्ध विभ्रमा लब्ध रागा लब्ध गतिर् लब्ध नानागमस्थितिः लब्ध भोगा लब्ध सुखा लब्ध हर्षाभिपूजिता ह्रींकार मूर्तिर्ह्रींकार सौदशृंगा कपोतिका ह्रींकार दुग्धाब्धिसुधा ह्रींकार कमलेन्दिरा ह्रींकार मणिदीपार्चिर् ह्रींकार तरुशारिका ह्रींकार पेटिकमणिर्ह्रींकारादर्शबिम्बिका ह्रींकार कोशाशिलता ह्रींकार स्थाननर्तकी ह्रींकार शुक्तिका मुक्ता मणिह्रींकार बोधिता ह्रींकारमय सौवर्ण स्तंभ विद्रुमपुत्रिका ह्रींकार वेदोपनिषत् ह्रींकाराध्वर दक्षिणा ह्रींकार नंदना राम नवकल्पकवल्लरी ह्रींकार हिमवद्गंगा ह्रींकारार्णव कौस्तुभा ह्रींकार मंत्र सर्वस्वं ह्रींकार परसौख्यदा हयग्रीव उवाच इतीदं ते मया ख्यातं दिव्यनाम्नां शतत्रयं रहस्यातिरहस्यत्वात् गोपनीयं महामुने शिवर्णानि नामानि श्रीदेवी कथितानि वै शक्त्यक्षराणि नामानि कामेश कथितानि हि उभयाक्षरनामानि हिवाभ्यां कथितानि वै तदन्यैर्कृतितं स्तोत्रम् एतस्य सदृशं किमो
नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः। सूतः उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य प्रगलितकलुषोऽभूच्चित्तपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमतनत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तेः पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अश्वाननमहाभाग रहस्यमपि मे वद शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि मे वद देशिका इति पृष्टः कुम्भजेन। हयग्रीवो वदत् पुनः। श्रीहयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बकटाक्षतः इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भज। एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्यासिद्धिदा भवेत्। तत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः शक्त्याक्षराणि शेषाणि ह्रीङ्कार उभयात्मकः। एवं विभागमज्ञात्वा श्रीविद्याजपशीलिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्विश्वचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैस्तु संसिद्धिं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं दधा चतुर्दशाकारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च वै चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च वै बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरश्रं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे वैन्दवश्लिष्टम् अष्टारेष्टदलाम्बुजं दशारयोः षोडशारं भूपुरं भुवनाश्रके शैवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं योजनाति स चक्रवितो त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपा शिवस्मृतः अविनाभावसम्बन्धः तस्मात् बिन्दुत्रिकोणयोः। एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यते। ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्यां चक्रवेदिनः सामान्यवेदिनस्ते वै विशेषज्ञोऽति दुर्लभः। स्वयं विद्याविशेषज्ञः विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यं श्रीविद्याचक्रवेदिना। अन्धं तव प्रविशन्ति ये ह्यविद्यामुपासते इति श्रुतिरप्याहिता सविद्योपासकान् नविद्योपासकान् पुनः विद्यानुपासकानेव निन्दत्यारुणिः श्रुतिः। अश्रुताश्रुताश्च यज्वानोऽप्यज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्तप्यम् इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिगता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः अस्मात् लोकादमुष्माच्चेत् ति अप्याहारुणिकी श्रुतिः। यः प्राप्तः प्रश्निभावं वा यदि वा शङ्करः स्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी इति तन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते। मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्यैव न संशयः स न शिल्पादिविज्ञानयुक्ते विद्युच्छब्दप्रयुज्यते मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः तस्माद्विद्याविदे दद्यात् ख्यापयेत् तद्गुणान् सुधीः। स्वयं विद्याविशेषज्ञः विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदं नार्चेत् चेत् को वा तं पूजयेत् जनः। प्रसङ्गादेतदुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भजा। यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यं नाम्नां शतत्रयं तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये विस्तरेण घटोद्भव। रहस्यनाम सहस्रपाठेत् फलमीरितं तत्कोटिकोटिगुणितम् एकनामजपात् भवेत्। कामेश्वराभ्यां तदिदं कृतं नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन तु श्रियः परम्परायस्य भाविनी तूत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते नाम्नां त्रिशति सर्वकामदा। अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ण्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्र पद्माभ्यां परिनिसृता नित्या षोडशिकारूपा विप्रा नादौ तु भोजयेत्। अभ्यक्तान् गन्धतैलेन स्नातानुष्णेन वारिण अभ्यर्च्य वस्त्रगन्धाद्यैः कामेश्वर्यादिनामभिः अपूपैः शर्कराद्यैश्च फलैः पुष्पैः सुगन्धिभिः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान्। एवं नित्यबलिं कुर्यात् आदौ ब्राह्मणभोजने पश्चात् त्रिशत्या नाम्नां तु ब्राह्मणान् क्रमशोर्चयेत्। तैलाभ्यङ्गादिकं दद्यात् विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवतिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या विंशतिसङ्ख्यया दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वा दिनैः त्रिंशत् षष्टिं शतं विप्रान् भोजे त्रिशतं क्रमात्। एवं यः कुरुते भक्त्या जन्म मध्ये सकृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिः तस्य करे स्थिता। रहस्यनाम सहस्रैरर्चनेऽप्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चात् ब्राह्मणभोजनं रहस्यनाम सहस्रमहिमायो मयोदितः। शशीकराणुरत्रैकात् नाम्नो महिमावारिधेः वाग्देवी रचिते नाम सहस्रे यद्यतीरितं तत्तत्फलमवाप्नोति नाम्योऽप्येकस्य कीर्तनात्। एतदन्यैर्जपैस्तोत्रैरर्चनैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात्। रहस्यनाम सहस्रकोट्यावृत्त्यास्तु यत्फलं
तद्भवेत् कोटिगुणितं नाम त्रिशतकीर्तनात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेश कामेशि कृतेऽस्मिन् गृहीतामिते सकृत् संकीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये भवेत् चित्तस्य पर्याप्तिः नूनमन्यानपेक्षिणे न ज्ञातव्यमितस्त्वन्यत् जगत् सर्वं च कुम्भजा यद्यत् साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत् सिद्धिमवाप्नोति पश्चात् कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रसङ्गास्तन्त्रेषु तैस्तैर्यत् साध्यते ध्रुवं तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुत्रदं वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्तप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देवी नाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयो नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत् कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवम् तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्ते त्वमिदं सदा अपरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यं नावशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रं ललिता प्रीतिदायकं न विद्यावेदिने ब्रूयात् न भक्ताय कदाचन न शटाय न दुष्टाय न विश्वासाय करेजितो यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत् इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्मात् गोप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमं रहस्य नाम सहस्रादति गोप्यमिदं मुने एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमं स्तोत्रेण अनेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरी मग्नमानसः समवर्तत इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीवागस्य संवादे ललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे ललिताम्बा त्रिशति स्तोत्ररत्नं समाप्तं सर्वं श्री ललितामातुः चरणारविन्दार्पणमस्तु यदक्षरपदभ्रष्टमात्रायणं चद्वैत् तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी. Tomorrow we will chant Devi Khadgamala, Lalita Ashtotra Shatanamavali and also Chit Shakti Ashtotra Shatanamavali. Okay, day after onwards, the Lakshmi related stotras we do. Sarvam Srimatu Charanarindarvanastu Bho. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhurvo Swahatsavarendam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yana Prajodaya Deva Savita Pradatya प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय ब्रह्मणे ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतं ब्रह्मैव तेनन्दव्यं ब्रह्मकरुणात् अन्नं चतुर्विधं स्वादरसैः षड्विधमनितं अक्षमद्वाक्तं नैवेद्यं ललिता त्रिपुरसुन्दरी नमः देवताभ्यर्षिं नमः अज्योतम्बिकाय नमः आदिपरात्मात्रे महानैवेद्यं श्रीरामायण कृष्ण सामसं देवताभ्यो नमः मध्ये मध्ये मदमानुत्तरावशस्तु बालकृष्णागताम्बूल नीराजनान्दर्शं नीलमेघश्याम नित्यमनु बालगोपाल कृष्ण मङ्गलं वेणुगान लोल कृष्ण वेदान्तवेद्य नवनीत चोर कृष्ण नित्यमंगल भक्त जनाधार कृष्ण परमदयावार्ति ओम गीतामृताद कृष्ण परमयोगीश कृष्ण पार्षद रूप कृष्ण सर्वमंगलम राम सर्वमंगलम सद्गुरु सर्वमंगलम ओम न तत्र सूर्यो भातारकम नेमावित्वमग्निदमे बान्धवना सर्वं तस्य वासा सर्वं भागं नारायण देवाद अन्नो विष्णुप्रचोदयात् सीतावल्लभ नमः ओम ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यां ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या ये मे गुरु वाक्य प्रमाण व्याख्याता सर्वयांता नित्यवृंदोत्सव सियावर रामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय अम्बे अम्बे माता आदि पराशक्ति माता की जय बोलो भाई श्री रामायण महाभारत भागवत उपनिषद गीता ब्रह्मस्तुल्य वासिष्ठ पातंजलि योगसूत्र अध्यात्म रामायण शिव पुराण संहितादि समस्त सनातन वैदिक संस्कृति श्रुति पुराणिता शास्त्र की जय वेद व्यासदेव सूतादि भागवताचार्य की जय शास्त्र वाल्मीकि तुलसीदास वेद व्यासादि रामायणाचार्य की जय वेद व्यास विष्णुराज्ञवल्क्य आद्य शंकराचार्य ब्रह्म विद्याचार्य की जय बोलो भाई सब संतन की जय सतगुरुनाथ महाराज की जय आज के आनंद की जय नमः पार्वती वते हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंदा गोविंद जानकी जीवन स्मृति राम राम अम्बे माता की जय समस्त श्रोता भक्त साधक जिज्ञासु सेवक मंडल की जय. Bhagavan, one more day you gave. We tried our best to offer it at your feet. Hope you are happy. Give us one more day, more and more days. May our life be eternal. And in every day's life, may we only remember you, serve you, reach you. Thank you. Om Shri Guru Bhyo Namaha. Thank you, friends, for your being together. And tomorrow, third day of Navaratra, will continue with all our regular schedule. No changes.
Hari Om. Don't miss any classes. As much